starts with a look, all that it took. I feel like I had too much champagne. It starts with a touch, I'm lost in the rush. Boy, you're like bubbles in my brain. You're under my skin, I'm drinking you in like I can't get it. Hi everyone, namaste, welcome back to my channel. And I am back after so long. Actually, I got COVID, so that's why I'm a little late. But yeah, here's a video for you guys. और ये video है Valentine's Day makeup look, a very soft romantic look. So इस look में मेरा main focus skin पे है. The skin should look flawless and eyes are minimal. So I'm starting with Colorbar Dry Oil. This is a skincare step because winters हैं, बहुत skin dry हो जाती है. Especially mine is super dry these days. So I'm just prepping my skin with this dry oil. I love this oil. It's so good. And then I'm just gonna prime my skin. And for priming my skin, I'm gonna use the priming oil from the Colorbar again, and they both are different, the dry oil and the priming oil. So priming oil सिर्फ prime करने में help करता है आपका makeup, and dry oil आप skin करके तरह भी use कर सकते हैं. So I have just patted in the priming oil and now my skin is all prepared for the makeup. So let's get started with the makeup. So I'm using Kiko Smart Concealer Palette और आप देख सकते हैं इसमें बहुत से shades हैं concealer के. I'm using the darkest shade to color correct my darkness on my face, जैसे कि under eyes, sides of mouth. आप definitely orange भी यूज़ कर सकते हैं. इस palette में orange भी था, but मेरे लिए dark concealer ज़्यादा अच्छे से काम करता है rather than orange. तो मैं dark prefer करती हूँ हमेशा, and मैं वहाँ color correct कर रही हूँ जहाँ पे भी मुझे required है, जहाँ पे भी मेरी hyperpigmentation है या फिर darkness है. Now I'm using LA Girl Pro Coverage Illuminating फाउंडेशन और मैं शेड यूज़ कर रही हूँ न्यूड बेज, और इसको मैं बैक ऑफ हैंड लेके एक छोटे से कंसीलर ब्रश की मदद से इस तरह से आई एम जस्ट अप्लाइंग ऑल ओवर माई फेस. इस मेथड से आपकी फाउंडेशन बहुत बच जाती है, आपका प्रोडक्ट बहुत बच जाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑल ओवर लगा लिया है फाउंडेशन. आई जस्ट हैव टू ब्लेंड इट, एंड इसके बावजूद भी बहुत सी फाउंडेशन बच गई है. सो आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट विद the beauty blender sponge. आप चाहे तो brush भी यूज़ कर सकते हैं. After applying the foundation like this with a smaller brush, you can blend it with the brush as well. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी flawless coverage आ रही है, and the foundation is blending beautifully because of the priming oil. So यहाँ पे मेरी फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड इन हो चुकी है, एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग इट टू माई नेक. और इतनी सारी फाउंडेशन बच गई जो कि बिल्कुल वेस्ट है. आई एम जस्ट वाइपिंग इट ऑफ विद अ टिश्यू. नाउ आई एम गोना डू माई अंडर आई डार्क सर्कल्स. Basically I'm just highlighting the dark circles and bridge of nose, forehead, cupid's bow and chin with Wet n Wild concealer in the shade medium, light medium, और एक concealer blending brush की मदद से I'm just blending the concealer really nicely, and आप देख सकते हैं just brightened up my whole face by highlighting some points of my face. और बाद में मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से edges blend करूँगी कंसीलर की, बिकॉज उससे लुक और फ्लॉलेस आती है. Now I'm setting it using PAC Baking Powder set, और मैं येलो एंड वाइट पाउडर मिक्स करके वहाँ लगा रही हूँ जहाँ पे भी मैंने कंसीलर लगाया था to bake my highlighting concealer. Now I'm taking Europe Girl 3D Sculpt Eyebrow Palette, और इसकी मदद से I'm just gonna shape and fill in my eyebrows. For me, eyebrows are very important. Just look at the amount of difference it makes, and I just love doing my brows. Anyways, now I am moving on to the next step, और उसमें मैं अपनी contour करूँगी. I'm using cups and lashes, so chiseled palette, contoured sculpt and chiseled palette, और मैं एक कॉन्टोरिंग ब्रश की मदद से इस तरह से आई एम जस्ट लाइनिंग जहाँ मुझे कॉन्टोर करना है. फॉर ब्लेंडिंग दी कॉन्टोर आई एम जस्ट यूजिंग अनदर ब्रश. ये जो पहले जो मैंने ब्रश यूज़ किया है ये एक गाइडलाइन की तरह काम करता है. अगर आप बिगनर हैं देन यू कैन डेफिनेटली use this tip. Then I'm using cups and lashes की blush palette in Just Say Cheese. I'm mixing 2-3 blushes and I'm just applying the blush on my apples of cheeks and blending it really well with the contour. For highlight I'm using Cuffs and Lashes की Northern Lights Glow palette, and I'm using
one of really nice champagne shade to highest points of cheeks, bridge of nose and cupid's bow. और अब मैं आइज़ बाद में कर रही हूँ इस लुक में बिकॉज आइज़ आर वेरी लाइट. अब नॉर्मली आई प्रेफर डूइंग आइज़ फर्स्ट बिकॉज अगर हैवी होती हैं फॉल आउट कम होता है. So I'm just using a lipstick before doing eyes. So I'm using Tan Helen Matte Attack lipstick from Sugar as an outline. और अंदर मैं fill in कर रही हूँ Miss Claire की matte lipstick in the shade Beige. I'm keeping the eyes and lips very muted. बिकॉज मेरा जो फोकस है पूरा बेस पे है इस वीडियो पे एंड यू कैन सी द बेस इज़ लुकिंग फ्लॉलेस. नाउ टू सेट एवरीथिंग आई एम यूजिंग शुगर ग्रैंड फिनाले सेटिंग स्प्रे इन SPF 30. It just give me that natural glow. और आई एम यूजिंग UCANBE फ्रूट पाई फिलिंग पैलेट फॉर माई आइज़. सबसे पहले मैं शेड यूज़ कर रही हूँ मिल्क शेड. इट्स अ वेरी नाइस बेबी पिंक कलर. एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से आई एम जस्ट अप्लाइंग ऑल ओवर माई लिड्स. बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी आइज़ पे बिकॉज माई फोकस इज़ माई बेस फॉर दिस लुक. सो यहाँ पे मैंने आई शैडो लगा लिया है, अच्छे से पैक इन कर लिया है. एंड नाउ आई एम जस्ट गोना टेक अनदर शेड. और जो शेड मैं ले रही हूँ दैट इज़ कॉल्ड फिल्बर्ट. इट्स अ टैनी ब्राउन आई वुड से. और इसको भी एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से मैं आउटर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इन विद द पिंक शेड. एंड इस तरह से आई एम जस्ट focusing on the outer corners. Now taking a small blending brush, I'm using the shade called Coconut. It's a darker brown. और सिर्फ outer corner पे इस तरह से concentrate कर रही हूँ and I'm just flaking it out inside or blending it inside, just to give a little depth to the eyes. That's it. बहुत ज़्यादा मैं dramatic नहीं करने वाली हूँ. Now from my brow bone, I'm using the shade called Melon to highlight the brow bone area. And I'm blending it really nicely again. Now I'm taking the shade called Sugarcane. This is a champagne shimmery shade जो मैं inner corners पे लगा रही हूँ just to brighten up the whole eye look. And for lashes I'm using Custom Lashes ski lashes in the shade style Khajuraho. और मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का लैश लाइनर ग्लू इन ब्लैक. आई एम जस्ट लाइनिंग माई आइज़ लाइक दिस, नॉट विंगिंग इट आउट और समथिंग लाइक दैट. जस्ट इनर विंग थोड़ा सा पॉइंट किया है एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग दी लैशेस लाइक दिस. सो आई लव द लैशेस. आप देख सकते हैं आईज आर वेरी मिनिमलिस्ट बट द लैशेस आर लुकिंग रियली वेल, लाइक इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग द मिनिमलिस्ट आई. सो लोअर लैश लाइन पर ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ मस्कारा लगा रही हूँ शुगर का एंड दैट्स इट बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप द आईज मिनिमल येट यू नो स्पीकिंग समथिंग. नाउ आई एम जस्ट रीटचिंग द ब्लश बिकॉज मुझे आइज़ मिनिमल रखनी थी तो मैं अब ब्लश उसके बाद टचअप करना था मुझे उसके अकॉर्डिंगली. सो जस्ट टच्ड अप द ब्लश एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. Here are my hair open. मैंने कर्ल्स किए थे just to get that romantic look and yeah that's it for the look. This look is very nice to wear on Valentine's Day. आपकी स्किन अच्छी लगनी चाहिए with a very minimalistic look of eye, nude lips and lot of flush of color on cheeks. So definitely you can go for this look for this Valentine's Day. Wanna play it again and again. I really hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. Let me know in the comment section and do give me a like and I'll see you in my next video. Till then, stay beautiful and stay healthy. Bye bye.